Welcome to Dr. Varsha Gaitonde's channel. In this video, we shall talk about breeding asexually propagated crops. Before getting into the actual topic, basically we should know what is genetics, gene, genotype, phenotype, then reproduction process in plants. As you know, genetics is the study of heredity and variation. Then we'll come to gene. Gene is the basic physical and functional unit of heredity. If we talk about genotype, it is the genetic constitution of an individual. Then phenotype means the external appearance of that particular or expression of that particular genotype. Again, we talk about the homozygosity, heterozygosity, then homogeneity and heterogeneity. The homozygosity means the allelic condition, how it give the genotypic expression. Homogeneity means how uniform they look like, and similarly, the heterozygosity and heterogeneity is expressed. Then we shall talk about the reproduction process in plants. Plants are generally reproduced in two means, one is sexual reproduction and one is asexual reproduction. The process of sexual and asexual reproduction depends on their genetic constitution as well as the environment where they are growing. So, when we talk about the sexual reproduction, plants may be self pollinated, cross pollinated, or often cross pollinated. And when we talk about the asexual reproduction, it is the process where multiplication of plants takes place without the fusion of male and female gametes. This is occurring either by vegetative plant parts or by vegetative embryos which develop without sexual fusion. Asexual reproduction is of two types. One is vegetative propagation and one is apomixis. Apomixis portion I have already discussed in my channel. So if you have any doubt, you can go back to the video and you can watch it. Here I am talking about vegetative reproduction. Let us talk about why the asexual propagation happens. The basic natural reasons for this particular process is reduced flowering and seed set. In many plants, you might have seen, especially in case of perennial species, due to some genetic or non-genetic reasons, there may be reduced flowering and seed set. Then non-flowering in many cases. Many plants won't flower. Then to avoid inbreeding depression in certain crops and in apomixis in some species. Let us talk about the appropriate use of vegetative propagation. When the plant is an outbreeder, when a plant is dioecious, if it has a recalcitrant seed, that means seed cannot be stored for a long generation period. When the seed has low germination rates, when flower and fruits are erratically, and to capture the plant's genetic diversity, we may go for vegetative propagation. So the vegetative reproduction is again divided into two parts. One is natural vegetative reproduction and one is artificial vegetative reproduction. Natural vegetative reproduction which takes place naturally in nature, and artificial means which is done through human intervention. Okay. So in natural vegetative reproduction, it may happen through underground stems, subaerial stems, roots, bulbils. Artificial reproduction may be by stem cuttings like in sugarcane, grapevines, roses, root cuttings like sweet potato, citrus, lemon, etc., in which layering, grafting, and all those processes are taken in ornamental crops. Now, the natural means we shall see in case of buds, rhizomes like the rhizomes are seen in turmeric and ginger, that is a mode of propagation. Then tubers like potato, corm we call this in case of arvi and banda, then bulb in case of onion and garlic. Then subaerial stems, the modifications of subaerial stems may be runners, stolons, suckers, etc. Here in the figure you may see this is a runner
which can be observed in mint, then suckers in banana, small suckers, then stolons in strawberry. This portion is called as stolon, and by multiplication of this process, the vegetative propagation takes place. Then bulbils. Bulbils are generally observed in case of garlic and tiger lily. Bulbils are the modified form of flowers that develop into plants directly without the formation of seed. These are vegetative bodies as their development does not involve fertilization and seed development or formation. Let us talk about the characteristics of asexually propagated crops. This is very important. In many examinations, they'll ask it. So, the first and basic characteristic feature of asexually propagation is majority of them are perennial, like sugarcane, fruit trees, etc. The annual crops are mostly tuber crops like potato, cassava, sweet potato, etc. That means asexually propagated crops may be annual or perennial, but majority of the cases they are perennial in nature. Many of them show reduced flowering and seed set, as I have already told this. Many varieties do not flower at all. Only the crops grown for fruits, particularly where good fruit set depends upon the seed formation, show regular flowering and satisfactory seed set. They are invariably cross pollinated. These crops are highly heterozygous and show severe inbreeding depression. Vast majority of asexually propagated crops are either polyploids like sugarcane, potato, sweet potato, etc. Many species are interspecific hybrids like banana, sugarcane, rubus. These crops consist of large number of clones, that is, progeny derived from a single plant through asexual reproduction. Thus, each variety of asexual propagated crop is a clone. Okay, so the significance are already discussed. Let us talk about some of the rationales. We will talk about the main five rationales about vegetative propagation. One is maintaining superior genotype. Whenever we will follow the asexual reproduction, we can maintain the superior genotypic constitution. How it happens? Like if I am interested in disease resistant plant, okay, and I know one plant is highly disease resistant but other plants are not. So what I will do, I just want to propagate or replicate that particular plant without changing, without expecting any change in that. So what I will do, I'll go for vegetative propagation. In vegetative propagation, you need to remember two things. One is absence of segregation and recombination, and the second thing is boosting the mitosis. Means here the process of meiosis is strictly forbidden or not taken place. So superior genotypes are maintained here. In the second rationale, problematic in seed germination and storage. Whenever we shall talk about the perennial trees, these tree species produce seedless fruits like off-season Dicrades edulis and need to be propagated vegetatively. Others bear fruit very scarcely for erratically like Prunus africana, or seeds difficult to germinate like Alanbrachia species. In these cases, vegetative propagation might be a suitable and cheaper alternative to seedling production. The third rationale is shortening time to flower and fruit. As you know, in case of perennial crops, there will be long juvenile period. So that what will happen? We won't go for any breeding experiments, because if a breeder want to go for 5 generation, he cannot, because as you know the human period maximum we may live for about if we talk about the current scenario, it is almost 50 to 60 years. So if a life cycle or a flowering period for the time taken for flowering in perennial crops is 15 to 16 years, means a breeder cannot take even 2 seasons. So to reduce the shortening the period of flowering and fruit, it is very much important.
The fourth rationale is combining more than one genotype in one plant. That means by grafting process. Okay, we will take the scion and stalk as we need in order to get the desirable stem character as well as the better establishing characteristic in roots. Okay, for root characteristic we boost the stalk, and for the stem characteristic we boost the scion. For combining the better characters we will go for vegetative propagation, like it may be air layering or grafting, like that. Then uniformity of plantations. As you know, G9 banana is a grand success because of the uniformity. So what is the beauty of that particular G9 banana? We may get the uniform harvest, so that marketing will be quite easy, and harvesting will come at a time, so that better harvesting as well as better quality of the produce. Many commercially grown species like Ervingia species, Dicradis, Cola species, etc., uniformity of growth form of fruiting season is important economically. Coming to the breeding methods for asexually propagated crops, several breeding methods like clonal selection, hybridization followed by selection, intervarietal hybridization, interspecific hybridization, polyploidy breeding, mutation breeding, tissue culture, anther culture are the important breeding methods in asexually propagated crops. In this video, we shall focus on the clonal selection because it is an important aspect in asexually propagated crops. So, what is a clone? Clone is a progeny of single plant obtained by asexual reproduction. Just remember, clone is an individual. Okay, it is produced by asexual reproduction without changing the genotype. Genotype may be homozygous or heterozygous, but it will remain to a greater number of generations. So from this plant, if we are generating many identical plants, that means it is clonal propagation, and this one is called as a clone. Next is clonal selection. Clonal selection is a procedure of selecting superior clones from the mixed population of asexually propagated crops like sugarcane, potato, etc. Several clones will be there, and we are just screening and taking one superior clone. The process is nothing but clonal selection. So what is the importance of clone? In clone, owing a heterozygosity and sterility in many crops are the only means of propagation. Clones are used to produce new varieties. Clones are very useful tool to preserve the heterozygosity once obtained in many crops. The superior plants are maintained, like in mango, orange, apple, sugarcane. That means in cross-pollinated crops, if homozygosity will result, means it may undergo severe inbreeding depression, and the vigor and the existence of crop may undergo some questionable form. That means it may undergo extinction also. So for that purpose, if we go for clonal propagation by maintaining the heterozygosity, the plants may survive in nature over the wide range of environments for a longer period of time. Coming to the main features of clones. The first one is homogeneous constitution. The genetic constitution of clone is always heterozygous and homogeneous. Okay, progeny of a clone is genetically identical and have same genetic constitution. Thus, homozygous and heterogeneous. Clones are they are homogeneous and heterozygous. Whatever it may be, the clones are homologous. No genetic variation within a clone is obtained, and if genetic variation exists within a clone, that is purely due to environment. Heterozygosity. Asexually propagated crops are heterozygous, so clone is also heterozygous. Progeny looks similar phenotypically but is heterozygous. Genetically, clones are highly heterozygous and exhibit severe inbreeding depression. Then wider adaptation.
more adapted to environmental variation due to high level of heterozygosity than the pure lines. As you know, over a period of time when the pure lines are obtained, they will become homozygous, but clones are always heterozygous. Vigorous growth. Clones have, if the clones are produced by hybridizing the two species, that means two species or varieties, that means vigor is managed and it will be managed over a generation period. Source of variation. There are three sources of variation in clones: bud mutation, mechanical mixture, and occasional sexual reproduction. Then segregation in F1. As you know, in the sexual progeny, we will obtain the or we will observe the segregation from F2 generation. But in clonally propagated crops, we may observe the segregation in F1 itself, so that there is a large amount of scope for selection in the F1 generation itself. Theoretically, clones are immortal. That means n number of generation they may survive in a definite form, provided there is no mechanical mixture, mutation, or other form of infection. Then the phenotype of a clone is due to the effect of genotype, environment, G/E interaction, and the population mean. That means the phenotypic differences among clones would be partly due to their genotype and partly due to environment and G/E interaction. Therefore, the efficiency of selection among clones as among pure lines would depend upon the precision with which environment and G/E interaction of genotypes are estimated. Then I'll just talk about inbreeding depression concept. Clones should be produced by using the partial inbreds, not by the complete inbreds, because in case of complete inbreds, these are produced by continuous selfing, and when the inbreds are produced by continuous selfing, there will be severe inbreeding depression. That means when a clone is produced by such kind of inbred or crossing certain inbreds having severe inbreeding depression, clone will deteriorate over a period of time. So partial inbred means they will be produced by sib mating or selfing in intermittent generation, so that there won't be severe inbreeding depression. So let us talk about the phases in clonal selection. We will get into the procedure of clonal selection or clonal breeding here. First phase is creation of genetic variation. Like hybridization or taking the wide species or related species, we will get into the gene pool and we will get the plant of our interest or single individual of our interest. Then we'll select the best genotype from a variable population to produce a superior clone. That clone should have more concentration in maintaining the clones, like segregation and recombination should be taken into account. Breeding value and heritability should also be taken into account. These characters are highly valued when hybridization is practiced in cloning, that we will discuss in the further slides. Selection should be based on single plant or plot. This is the process how the clonal selection takes place. In the first year, we will take a gene pool. From there, we will select several hundreds of superior plants. From there, we will take the superior plants and we will generate the clones in vitro. Okay. From that clonal population, what we will do? We will further do the selection process. That means desirable clones are selected in the second year. In the third year, what we will do? We will go for the preliminary yield trial. Means with the standard checks, we will just compare the different characteristic features of the clonal plants. Selection for quality, disease resistance, for qualitative as well as quantitative traits will be done in this case. Few outstanding clones are selected from this clonal lines. Then from 4th to 6th year, what we will do? We'll go for multi-location trial in order to get the G/E interaction as well as location and
seasonal interaction. To study all the four characters, always we prefer the multi-location trials. Multi-location trials are not only depend on the locations, but it should also be depending on the seasons, because we should screen for different seasons in order to get the disease resistance as well as stability of the qualitative characters. Then from 4th to 6th years, what we should do, we should select the best clones identified for released as new variety. In the 7th year, what we will do, best clones released as a new variety, and further seed multiplication for distribution begins. Let us talk about the sources for clonal selection. For clones may be local varieties or introduced material, hybrids or segregating populations. One more concept takes place, clonal degeneration. As I have already told you when we were talking about the characteristics of clones, but here I would just like to focus on the mutation, which is a changer in clonal propagation. So mutation, as you know, the rate of mutation is always less. It is 10 raised to minus 5 to 10 raised to minus 7. If recessive mutations are there, that can only expressed in homozygous condition. Mutant allele would be homozygous only when either both the copies of genes present in a cell mutate at the same time to produce the same mutant allele, or the mutant allele is already present in the heterozygous condition in the original clone. It happens rarely. Then if we shall talk about the dominant bud mutations, which express themselves more frequently than do recessive ones. As I have already told, the recessive mutants are only expressed when it is in the homozygous condition. That means clone, if it is there in homozygous condition, then only it is obtained. Okay, if it is in homozygous recessive form, then we can identify the recessive mutations. But when it is in heterozygous condition, only the dominant bud mutations are identified. Viral disease, mechanical mixture, then sexual reproduction are the basic things which are the game changers in clonal propagation. We shall just focus on the sexual reproduction in clonal propagation. The seedlings obtained from sexual reproduction in a clone would be genotypically different from the asexually progeny of the clone. Some examples like Kufri red potato, which is a selection from Darjeeling red round, was derived from a single disease-free plant. Similarly, Kufri Saped potato is a selection from variety Fulva. Coming to the merits and demerits of clonal selection. Merits like variety evolved by this method retains all the characters of the parental clones for several years. That means I have propagated one plant, and that, not propagation, multiplied one plant, and that plant character will be indefinitely maintained over a period of time. Then the second point is varieties are highly uniform like pure lines. Even though the condition is heterozygous, okay, it is maintained in the same form in homogeneous condition. That means all plants will be uniform even though the genetic constitution is heterozygous, and uniformity is just comparable to the pure lines. They are highly stable because there is no risk of deterioration due to segregation and recombination. As you know, in sexual process, meiosis occurs where segregation and recombination happens, but here it is prohibited. It is an effective method for genetic improvement of sexually propagated crops, useful in isolation of the best genotype from a mixed population. Selection scheme is useful for maintaining the purity of clone. It is the only method applicable to clonally propagated crops. Clonal propagation avoids inbreeding depression and preserves the gene combination. This method can be combined with hybridization to create further variability for in selection. तो demerits क्या है clonal propagation का?
इसका डीमेरिट ये है कि इट यूजेस द वेरिएबिलिटी विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट एंड नॉट पॉसिबल टू क्रिएट वेरिएबिलिटी इन क्लोनल सिलेक्शन प्रोग्राम। जेनेटिक मेकअप कैनॉट बी इम्प्रूव्ड बाय दिस मेथड विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। मतलब क्लोन को मेंटेन करते जाएंगे तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा अनलेस उसमें कोई म्यूटेशन, मैकेनिकल मिक्सचर और वायरल डिसीज आ जाए, लेकिन एज सच वी कैनॉट गो फॉर द further genetic makeup. Then varieties developed by clonal selection are highly prone to diseases। क्योंकि यूनिफॉर्म रहते हैं तो क्या होगा, इजीली वो कि कोई भी एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन को प्रोन हो सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब तक हमने क्लोनल सिलेक्शन को देखा, कैसे एक प्लांट को लेके कोई जर्म प्लाज्म या लोकल वैरायटी या कुछ भी लेके उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, लाइक क्लोन्स बनाना है एंड हाउ इट इज़ यूटिलाइज्ड, इसको हमने स्टडी किया। अब देखते हैं क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, हम दो इंडिविजुअल, 2 या मोर इंडिविजुअल्स को क्रॉस करेंगे, ठीक है। इट मे बी 2 इंडिविजुअल्स और n नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन में सर्टेन स्टेप्स है, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, देन प्रोडक्शन ऑफ F1 प्रजनी एंड सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर क्लोन्स। तो हम 1 बाय 1 स्टेप को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स सिलेक्शन करने में बहुत सारा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट, जैसे मैंने बताया था कि इसमें पार्शियल इनब्रेड को लेना पड़ता है, ठीक है। क्लोनल प्रोपगेशन जनरली हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में ही यूज़ करते सकते हैं। तो जब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लाइन्स आते हैं तो उनको हम जनरली इनब्रेड्स मानते हैं, ठीक है। इट मे बी इन मेज और बाजरा और एनीथिंग इफ़ वी टॉक अबाउट द फील्ड क्रॉप्स। तो वो इनब्रेड्स हमेशा पार्शियल इनब्रेड रहना चाहिए टू अवॉइड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। फिर उसका GCA एंड SCA को इम्पॉर्टेंस देना होता है। अगर हम 2 ही इंडिविजुअल को क्रॉस करके क्लोन्स लेना चाहते हैं देन वी शुड फोकस ऑन स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, ठीक है। अगर हम मैनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल ले रहे हैं एंड पॉलीक्रॉस मेथड बना रहे हैं और उस पॉलीक्रॉस का जो F1 आएगा उससे क्लोन बनाना चाहते हैं, देन व्हाट वी शुड डू, वी शुड गो फॉर चेकिंग द जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ F1 प्रोजनी। F1 बनाएंगे तो F1 से हम क्लोन लेंगे, देन सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर क्लोन्स। कंडीशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कैन बी यूज्ड ओनली इफ इन सच क्रॉप्स विच कैन प्रोड्यूस सेक्शुअली। जैसे कि हम क्लोनल प्रोपगेशन कर रहे हैं तो जनरली हम एसेक्सुअल प्लांट्स में ही करते हैं, लेकिन क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन करने के टाइम में जो पेरेंट्स होते हैं दे शुड बी सेक्सुअली कंपैटिबल, तभी हम उसका F1 ले सकते हैं। मतलब जब वो अच्छे से फूल दे रहा है, सीड सेट कर रहा है, तभी ना हम उसका F1 बना पाएंगे। देन वी शुड सेलेक्ट ओनली द प्लांट्स विच आर सेक्सुअली प्रोपगेटिंग, ओके। वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लैकिंग, तो उस जगह में हम म्यूटाजेनेसिस और बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स लाइक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। पार्शियल इनब्रेड चूज़ करना चाहिए। तो अब एक्चुअल प्रोसेस में जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्लोन्स के हाइब्रिडाइजेशन में। पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्टेड क्लोन्स आर हाइब्रिडाइज्ड। पहले हम F1 बनाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से नहीं तो हम ऐसे करेंगे, पहले सुपीरियर प्लांट्स लेते हैं, उसके क्लोन्स बनाएंगे, देन दोज क्लोन्स आर क्रॉस्ड, ठीक है। तो क्लोन A एंड B आर क्रॉस्ड, जैसे कि ये क्लोन A है एंड दिस इज क्लोन B। फर्दर इन द सेकेंड ईयर हम सेक्सुअल प्रोजनी को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब हमको जो क्रॉस से मिलेगा वो सेक्सुअल प्रोजनी होगा। सेवरल थाउजेंड्स लाइक 5000 to 20,000 सीडलिंग्स डिराइव्ड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर स्पेस प्लांटेड। तो हम उसको स्पेस प्लांट करेंगे, स्पेस प्लांटिंग है। देन 500 to 2000 सुपीरियर प्लांट्स हम इससे सेलेक्ट करेंगे। अब हमने 20,000 तक प्लांट्स लिया था, वहाँ से हम स्पेस प्लांटिंग करके 500 to 2000 प्लांट सुपीरियर प्लांट सेलेक्ट करेंगे। तो थर्ड ईयर में क्या करेंगे, क्लोन्स लगाएंगे। तो इंडिविजुअल क्लोन फ्रॉम द सेलेक्टेड F1 प्लांट्स आर ग्राउंड विथ सुटेबल चेक्स।
तो फिर सुपीरियर क्लोन्स आर सेलेक्टेड। अगर क्लोन्स चेक से भी बेटर परफॉर्म कर रहा है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। 4th ईयर में क्या होगा, वी विल गो फॉर प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल्स विथ अप्रोप्रिएट चेक्स, देन आउटस्टैंडिंग क्लोन्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ओके, आउटस्टैंडिंग क्लोन को जब सेलेक्ट करेंगे देन वी विल प्लांट इन मल्टी लोकेशन ट्रायल फ्रॉम 5th to 7th ईयर। ओके, 5th to 7th ईयर में हम मल्टी लोकेशन ट्रायल करेंगे। आफ्टर दैट हम 8th ईयर में क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग क्लोन्स आर रिलीज्ड एज ए न्यू वेराइटी। फिर हम सीड मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे और उसको पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज ए होल प्रोसेस ऑफ क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन। देन वी शैल टॉक अबाउट द अनदर 2 प्रोसेसेस। ठीक है, अब तक हमने बात किया हाइब्रिडाइजेशन करने के बारे में। फिर क्लोनल सिलेक्शन में और भी क्या हो सकता है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, जैसे कि सिंगल स्पीशीज या वैरायटी का क्लोन बनाएंगे, उसको हम क्रॉस करेंगे। तो सक्सेस स्टोरीज है रूबस, शुगर केन, पोटैटो, स्ट्रॉबेरी में कर चुके हैं ऑलरेडी। फॉर लेस क्लोनल डिजेनरेशन कॉम्प्लेक्स क्रॉसेस भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कुफरी कुबेर एक वैरायटी बनाया जो क्रॉस कॉम्बिनेशन है सोलेनम कर्टिलोबम इंटू सोलेनम ट्यूबरोजम इंटू सोलेनम एंटीजेना। ठीक है, फिर एक वाइल्ड सोर्स लिया गया इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए सोलेनम डेमिसम। ये डिसीज रेजिस्टेंस ब्रीडिंग में बहुत अच्छा कामयाब रहा, तो इसको सोलेनम ट्यूबरोजम विच इज़ ए कल्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पोटैटो उसके साथ क्रॉस करके अच्छे क्लोन्स बनाया गया। देन थर्ड वन इज म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्लोनल सिलेक्शन किया, फर्दर उसमें म्यूटेशन इंड्यूस करेंगे तो वेरिएशन हम पा सकते हैं। दैट वेरिएशन में बी ए बेस्ट सोर्स फॉर स्पेसिफिक ट्रेट। Often the breeder may wish to modify only one or few traits of the existing excellent variety, which can be achieved by mutation breeding. Many clonal crops have long juvenile phase which discourage the use of hybridization. तो उस condition में mutation use करके हम उसका generation period short कर सकते हैं। Sexual reproduction may not occur in many crops. Seeds may be unable to germinate or hybridization may be difficult. Isolation of recessive mutation without a resource to sexual reproduction is greatly facilitated by their highly heterozygous nature. अब देखते हैं क्लोन, प्योर लाइन एंड इनब्रेड के बीच में क्या डिफरेंस है। एक कैरेक्टर लेते हैं, फिर उसके डिफरेंट फॉर्म्स में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज मोड ऑफ पॉलिनेशन इन क्रॉप स्पीशीज वेयर दे अकर। क्लोन्स क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं एंड इनब्रेड भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में ही डिस्कस करते हैं, लेकिन प्योर लाइन हमेशा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में बनाते हैं। ओके, फिर नेचुरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पीशीज, क्लोन एसेक्सुअल होता है वेरएज प्योर लाइन एंड इनब्रेड आर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है। जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट्स इन नेचुरल पॉपुलेशन, क्लोन्स हमेशा हेट्रोजाइगस एंड होमोजीनियस फॉर्म दिखाएगा। प्योर लाइन होमोजाइगस होमोजीनियस होता है, इनब्रेड हेट्रोजाइगस एंड होमोजीनियस होता है जस्ट लाइक क्लोन। फिर क्लोन्स कैसे ऑब्टेन किया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम ए सिंगल प्लांट, लेकिन प्योर लाइन एंड इनब्रेड प्योर लाइन नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम सिंगल होमोजाइगस प्लांट से लिया जाता है एंड इनब्रेड को आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन अदर फॉर्म लाइक सीड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। देन कैसे मेंटेन किया जाता है, क्लोन्स को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेंटेन किया जाता है, प्योर लाइन को सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, इनब्रेड को सेल्फिंग एंड सीबिंग करके मेंटेन करते हैं। देन ऑल द प्लांट्स इन ए सिंगल एंटिटी आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इन क्लोन्स, आइडेंटिकल इन प्योर लाइन्स, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन इनब्रेड्स। नेक्स्ट कैरेक्टर है वैरायटी के तरफ से इसको यूज़ किया जाता है कि नहीं, क्लोन्स को यूज़ किया जाता है, प्योर लाइन्स को भी किया जाता है, लेकिन इनब्रेड को डायरेक्टली एज ए वैरायटी कभी यूज़ नहीं किया जाता है बिकॉज वो ख़त्म हो जाएंगे ड्यू टू सीवियर इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बिकॉज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स तभी खुश रहेंगे व्हेन दे आर मेंटेन्ड बाय क्रॉसिंग। ठीक है, मतलब जिसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है उसके साथ क्रॉस करेंगे तभी वो अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे व्हेन हेट्रोसिस इज अ फेनोमेना दैट।
नेक्स्ट कैरेक्टर है द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए प्लांट विद इन ए वेराइटी। क्लोन का हेट्रोजाइगस होता है, प्योर लाइन का होमोजाइगस होता है, एंड इनब्रेड का नियरली होमोजाइगस होगा। ऑर्गेनिज्म वेयर फाउंड क्लोन्स प्लांट्स में, एनिमल्स में भी दिख सकते हैं, प्योर लाइन प्लांट्स में और इनब्रेड प्लांट्स एंड एनिमल्स में। So let us talk about the overall achievement in clonal selection or sexual reproduction through artificial selection। ठीक है, तो क्लोनल सिलेक्शन में इम्प्रूव्ड वैरायटी पहला है पोटैटो में, कुफरी रेड पोटैटो। इसको किससे क्लोन बनाया था? दार्जिलिंग रेड राउंड। ये सिंगल डिसीज फ्री प्लांट था दार्जिलिंग रेड राउंड, उससे कुफरी रेड पोटैटो बनाया गया। फिर कुफरी सफ़ेद है जिसको फुलवा उसका पेरेंट था, मतलब फुलवा को क्लोन बना के कुफरी सफ़ेद लिया गया। देन बनाना में आएंगे तो बॉम्बे ग्रीन बनाना, इसको कैवेंडिश ड्वार्फ कैवेंडिश से लिया गया, ये एक बर्ड सिलेक्शन है। फिर पीडी मंथन एंड हाईगेट, इनको मंथन एंड ग्रॉस मिशेल से बनाया गया है। फिर अगर अचीवमेंट्स थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन लेंगे तो पोटैटो में कुफरी अलंकार, कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी सूर्या, कुफरी अरुण, कुफरी क्रांति, कुफरी बहार, कुफरी सदाबहारी, ये सब बनाया। फिर उसी में पोटैटो में ही लेट ब्लाइट रेजिस्टेंस के लिए कुफरी ज्योति, फिर मॉडरेट लेट ब्लाइट रेजिस्टेंट के लिए कुफरी ख्याति विच इज़ सुटेबल फॉर कल्टिवेशन इन प्लेन रीजन्स ऑफ इंडिया। देन फॉर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस कुफरी शीतमन। शुगर केन में बहुत सारे वेराइटीज़ बनाया है, जैसे कि हाई शुगर कंटेंट के लिए CO 1148, CO 1158, COS 510, फिर CO 975, COS 190, CO 541, ये सब डिसीज़ रेजिस्टेंस एज वेल एज फॉर हाई शुगर कंटेंट के लिए बनाया है। और म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू बहुत सारे वेराइटीज़ बनाया गया है। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट वन विच इज़ प्रॉब्लम इन ब्रीडिंग एसेक्सुअली प्रोपगेटेड क्रॉप्स। तो एसेक्सुअली प्रोपगेटेड क्रॉप्स में फ्लावरिंग एंड फर्टिलिटी हमेशा कम हो जाता है, लाइक शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एट्सेट्रा। फिर पॉलीप्लॉइडी का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि पियर, एप्पल, स्ट्रॉबेरी में होता है। फिर सेल्फ CMS दैट इज़ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडिटी कर सकते हैं, जैसे कि रूबस, स्ट्रॉबेरी, बनाना में। पार्थेनोकॉर्पी होता है पाइनएप्पल, सिट्रस, फिग में। फिर फैकल्टेटिव एपोमिट्स मैंगो एंड सिट्रस में। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि रेड्यूस्ड फ्लावरिंग एंड फर्टिलिटी जहाँ दिखता है तो हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन स्टेराइल क्लोन्स कर सकते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम है डिफ़िकल्टीज इन जेनेटिक एनालिसिस, जैसे कि GCA एंड SCA का एस्टिमेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है जहाँ पे पेरेंट्स को लेते हैं, बिकॉज अगर पेरेनियल प्लांट्स है तो उसका GCA एंड SCA एस्टिमेट करना बिकॉज ऑफ इट्स ए लॉन्ग जुवेनाइल पीरियड बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। देन पेरेनियल लाइफ साइकिल, इससे तो ब्रीडिंग मेथड्स यूज़ करना ही बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। फिर जहाँ पे म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन यूज़ कर सकते हैं या पॉलीप्लॉइडी यूज़ होता है, वहाँ पे एक और प्रॉब्लम आता है काइमरा। ठीक है, तो काइमरा में क्या है? काइमरा इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स। तो काइमरा में क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट हो जाएगा एक ही सिंगल इंडिविजुअल में। तो हम बेसिकली जब काइमरा की बात करते हैं तो 3 लेयर में इसको डिवाइड करते हैं कोई भी प्लांट में, मतलब एडवेंटेशियस और सैम बोलते हैं उसको, शूट एडवेंटेटिव मेरिस्टेम। तो इसमें क्या होता है? L1, L2 एंड L3 लेयर बोलते हैं। L1 लेयर से क्या होता है? L1 लेयर से हमेशा हमें लीव्स मिलते हैं, L2 लेयर से गेमीट्स बनते हैं एंड L3 लेयर से रूट एंड अदर पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो काइमरा को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ पेरिक्लिनल, देन मेरिक्लिनल एंड सेक्टोरियल काइमरा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो पेरिक्लिनल काइमरा मोस्ट स्टेबल होता है। तो पेरिक्लिनल काइमरा क्या होता है? जैसे मैंने L1, L2, L3 लेयर्स के बारे में बात किया, तो एक कंप्लीट लेयर जो है L1 लेयर या कंप्लीट L2 लेयर है उसमें, या कंप्लीट L3 लेयर है उसमें, क्या है? काइमरा प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब डिफरेंट टिश्यू उसमें आ जाएगा या उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट हो जाएगा। दैट इज़ पेरिक्लिनल काइमरा। मेरिक्लिनल काइमरा क्या होता है?
जैसे कि एक स्मॉल पोर्शन में, इट में कंसिस्ट ऑफ L1 L2 और L2 L3 और लाइक दैट, ठीक है। तो एक स्मॉल पोर्शन में आएगा तो वो होगा मेरिक्लिनल काइमेरा, लेकिन वो कंप्लीटली कवर नहीं होता है। फर्दर जब जैसे ही प्लांट का एज बढ़ने लगता है तो क्या होगा, उस काइमेरा में पेरिक्लिनैलिटी आ जाएगा, मीन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट विल गेन द स्टेबिलिटी एंड इट विल बिकम पेरिक्लिनल काइमेरा। फिर एक आता है सेक्टोरियल काइमेरा। सेक्टोरियल काइमेरा क्या होता है, हमेशा एक सेक्शन को लेगा, ओके। either it may take the half portion or something like that, it will cover whole L1 L2 L3 portion, लेकिन at particular section, वो होगा सेक्टोरियल काइमेरा। एक और होता है सॉलिड काइमेरा। सॉलिड काइमेरा इज नथिंग बट ये मेकअप होता है जिससे एक ही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। तो सॉलिड काइमेरा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली सिमिलर होता है। तो वो काइमेरा नहीं होता है, दैट विल बी ए डिफरेंट कैरेक्टर विच इज़ बूस्टेड इन क्लोनल प्रोपगेशन। लेकिन जहाँ पे हम यूनिफॉर्मिटी या स्टेबिलिटी चाहते हैं वहाँ पे काइमेरा एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब हम म्यूटेंट बनाना चाहते हैं या सोमैटिक पॉपुलेशन में, जब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में या कोई भी क्लोन में हम कोई वेरिएशन चाहते हैं तो काइमेरा फॉर्मेशन इज़ बेस्ट, तो उसमें हम कुछ वेरिएशन पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप अब तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो देखा। तो डिफरेंट क्राइटेरिया को डिस्कस किया कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फिर रैशनल क्या होता है। देन वी टॉक्ड अबाउट क्लोनल प्रोपगेशन, how the clonal selection is done, clonal hybridization is done, then what is the role of mutation and hybridization in asexual reproduction. Finally, we talked about some merits, demerits and problems in asexual reproduction. So I hope the topics or the part which I covered will be helpful to you. If you have any doubt, you can put it in the comment box. If you like this video, please do not forget to like, share, commenting and subscribing my channel. Thank you once again.